पिलाने आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ते पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो बेसिकली आज सेमीकंडक्टर फिजिक्स रो लास्ट वीडियो होबो। बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे सेमीकंडक्टर फिजिक्स रो गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन अछि हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैक्सिमम टाइम जेतबे से फुल वेव रेक्टिफायर आसे तो देखिबे तर जो एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को हमें केम कोठी यूज करू छी। तो फर्स्ट बुझबा रेक्टिफायर कौन, व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर गोटे डिवाइस जार काम होची एसी को डीसी रे कन्वर्ट करिवो। इट इज अ डिवाइस which converts AC into DC। AC माने पिला अल्टरनेटिंग करंट, DC माने कौन, डायरेक्ट करंट। तो जे एसी रू डीसी को कन्वर्ट करबा सेटा को मैं रेक्टिफायर कहबा। एसी रा केमति थाए, आमी जदि टाइम और करंट भीतर ग्राफ प्लॉट करबा एसी रो एमति किछि आसीबो। एटा होछि अल्टरनेटिंग करंट। आमी जदि टाइम और करंट भीतर ग्राफ प्लॉट करबा डीसी रो देन ग्राफ इज इन द स्ट्रेट लाइन आसीबो। तो एटा हला एसी, एटा हला डीसी। तो ये मझे जो गोटे रेक्टिफायर लगे दवा रेक्टिफायर तो से कौन करिवो एमती एसी को डीसी रे कन्वर्ट करिवो। आम घर जो इन्वर्टर लगे थाए से उल्टा काम करे, डीसी को एसी रे कन्वर्ट करे। आम घरे जो बैटरी थाए बैटरी कौन करे चार्ज स्टोर करे, चार्ज हो जाए। बट आम फैन मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट एसी रे चले, डीसी रे नहीं। तो इन्वर्टर रा काम होची से कौन करिवो डीसी रू एसी को कन्वर्ट करिवो। ठीक अछि। तले हम देखिबा हम पीएन जंक्शन डायोड को केमती गोटे रेक्टिफायर हिसाब रे यूज करूचे। बुझबा पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पिला दुई प्रकार अछि। रेक्टिफायर बेसिकली टू टाइप्स रो। रेक्टिफायर बेसिकली टू टाइप्स रो। गोटेला हाफ वेव रेक्टिफायर आ गोटेला फुल वेव रेक्टिफायर। पिला माने हायर क्लास को गले त माने जानि परिबो फुल वेव रेक्टिफायर भी दुईटा कैटेगरी अछि। सेंटर टैप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। बट हम एटी सेंटर टैप रेक्टिफायर केवल पड़े। फुल वेव रेक्टिफायर कोन एसी रो हम जदि एसी को मार्क करिबा एटा जदि हमर एसी हैला एटा को एसी रो फुल साइकिल कहउछ। एटा को पॉजिटिव हाफ साइकिल कहउछ, एटा को नेगेटिव हाफ साइकिल कहउछ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कोन नहीं हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। माने एसी रो हाफ साइकिल को से डीसी रे कन्वर्ट करिवो। बाकी आउ गोटे हाफ साइकिल को से कन्वर्ट करिवो नै, दैट मींस सप्रेस हे जेबो सेटा। फुल वेव रेक्टिफायर कहले फुल ऑफ एसी इनटू डीसी। तो पिला माने आकुने बहुत गुडा क्वेश्चन फ्रेम ही पारे। हाफ वेव रेक्टिफायर रे कोन पतर सर्किट डायग्राम बेले बेले पचारे। हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट ग्राफ बेले बेले पचारे। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम पचारि पारे, फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट ग्राफ पचारि पारे। तो एई चैप्टर को जदि लॉन्ग क्वेश्चन न आसिला एटॉमिक न्यूक्लियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मिसी की गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। एटॉमिक रे तो गोटे क्वेश्चन बोर, न्यूक्लियर रे लॉन्ग क्वेश्चन सेमति किछ नाही। किंतु पूर्व वर्ष फ्यूजन पकई देछि तो न्यूक्लियर ए वर्ष पकेबार नहीं लॉन्ग क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
बोर तीनटा फुल वेव रेक्टिफायर चारटा चारटा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आसीबो ठीक अछि हम देखिबा पीएन जंक्शन डायोड as a half wave rectifier जदि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर न आसिला तल माने कि चला 5 रु 6 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क गोटे पड़िबो 2 मार्क गोटे पड़िबो 1 मार्क कोन पड़िबो बुझी तो छोटो चैप्टर ना हाथ गणित क्वेश्चन अछि 6-7 क्वेश्चन टोटल अछि तो इजीली गोटे पिला 6-7 मार्क ए चैप्टर पाई परिबो तो जिबा पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड as a half wave rectifier as a half wave rectifier फर्स्ट हमको बुझिबा गोटे प्रिंसिपल कौन ए हाफ वेव रेक्टिफायर को हमें पीएन जंक्शन डायोड को यूज करी गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन करबा तो तार प्रिंसिपल कौन को प्रिंसिपल काम करबा सिंपल कथा when pn junction diode is forward bias it behaves like a short circuit and when pn junction diode in reverse bias it behaves like a open circuit माने जदि मु एटा गोटे पीएन जंक्शन डायोड नउची पी को पॉजिटिव नउची एन को नेगेटिव नउची सो दैट एटा कोन हेगला फॉरवर्ड बायस हेगला एटा पी एटा एन फॉरवर्ड बायस हेगला फॉरवर्ड बायस रे से कोची इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट कहले कोन बुझत माने शॉर्ट सर्किट कहले हमें बुझे जीरो रेजिस्टेंस माने एमती जदि उल्टा स्थिति अछि पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव एमती हमें नैचे देन कोन हबो पिला माने को हम ओपन सर्किट हिजो रिवर्स बायस ओपन सर्किट माने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ठीक अछि the principle that kono when pn junction diode is forward biased it behaves like short circuit and when it is reverse biased when it is reverse biased it behaves like open circuit এটা তার প্রিন্সিপল ঠিক আছে পিলা कंस्ट्रक्शन जिबा कंस्ट्रक्शन रे कोन यूज करू जिबा देखो कंस्ट्रक्शन गोटे ट्रांसफार्मर निया हैची पिला तमे माने पढिथिबो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर रे पढिथिबो ट्रांसफार्मर रो गोटे प्राइमरी कॉइल थाए गोटे सेकेंडरी कॉइल थाए एटा हला हमरो ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल सहित गोटे एसी सोर्स लागिची सेकेंडरी कॉइल सहित गोटे पीएन जंक्शन डायोड लागिची आ गोटे लोड रेजिस्टेंस लागिची आरएल नोचे आमे जोठी आउटपुट ता पाइबा हमको आउटपुट एठी मिलिबो आमे इनपुट एठी दबा कोठी इनपुट दबा प्राइमरी रे आउटपुट कोठी पाइबा सेकेंडरी रे इनपुट रे कोन लागिची एसी सोर्स लागिची आउटपुट रे कोन लागिची गोटे पीएन जंक्शन डायोड लागिची आ गोटे लोड रेजिस्टेंस लागिची ठीक अछि पिला बढ़िया तमे कोन लिखि परिबो फर्स्ट पॉइंटर कोन लिखि परिबो an AC source
is connected with primary coil of the transformer, primary coil of the transformer. सेकेंड पॉइंट कौन लिखो पिला माने सेकेंड पॉइंट कौन लिखिबो एटाला पी टाइप एटाला एन टाइप ना सेकेंड पॉइंट कौन लिखिबो PN junction diode and load resistance is connected in secondary. PN junction diode and load resistance are connected in series with the secondary सहित सीरीज कनेक्शन ठीक है पिला बढ़िया एबे देखिबा वर्किंग को जीवा देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पिला माने मोटा लिखि दोचे एटा लिखि दोचे एटा के आवश्यकता नहीं हमें इनपुट आउटपुट को साइमल्टेनियसली बुझिबा इनपुट रे हमें एसी देछि एटा ला इनपुट टाइम आउ इनपुट वोल्टेज भितर ग्राफ एंड एटा हला टाइम आउ आउटपुट वोल्टेज भितर ग्राफ इनपुट तो हम दे देछि पॉजिटिव हाफ साइकिल एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव पिला माने ई सर्किट डायग्राम बेले बेले 3 मार्क रो क्वेश्चन पचारे ए इनपुट आउटपुट ग्राफ बेले बेले भी 3 मार्क रो क्वेश्चन पचारे तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पिला माने हमें म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े दिवा हमें जदि प्राइमरी रे करंट को चेंज करिबा करंट चेंज ले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हबो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट तो करंट चेंज ले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हबो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ले ईएमएफ इंड्यूस हबो हमें जदि प्राइमरी रे करंट को चेंज करिबा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हबो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ले ईएमएफ इंड्यूस हबो तो प्राइमरी पाखरे सेकेंडरी अछि तो हम जदि प्राइमरी रे करंट को चेंज करिबा सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हबो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ रो पोलैरिटी थिबो पोलैरिटी माने गोटे कोटा प्लस हिथिबो गोटे कोटा माइनस हिथिबो हाल तो ये करंट प्लस और माइनस को फ्लो तो माने के चलीबा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव मानि नियो एटा को ए नउची एटा को बी नउची ताको बुझी दियो पिला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मानि लियो ए पॉजिटिव हे गला एंड बी नेगेटिव हे गला तो पी पाइला पॉजिटिव एन पाइला नेगेटिव पी पाइला पॉजिटिव एन पाइला नेगेटिव तो एटा फॉरवर्ड बायस तो फॉरवर्ड बायस रे कोन शॉर्ट सर्किट जीरो रेजिस्टेंस तो करंट चलला टिंग 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 लोड रे एंटी करंट चलला मानि नेटा सी टी तो करंट सी रु डी को फ्लो हैला तमने पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट अछि तो कोन लिखबे ताल को ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल A is positive and B is negative. This makes diode forward bias. So current
flows from C to D. Current flows from C to D. कला एटा गला पॉजिटिव हाफ साइकिल कला एबे कोठी जिबा नेगेटिव हाफ साइकिल जते नेगेटिव हाफ साइकिल आसीबो एसी तो तार सहित ओन कैरेक्टर से तार करंट को चेंज करिवो प्लस माइनस एटा नेगेटिव एटा नेगेटिव हाफ साइकिल रे एटा हेगला नेगेटिव बीटा हेगला पॉजिटिव यदि ए हेगला नेगेटिव माने पी पाइला नेगेटिव एन पाइला पॉजिटिव तो एटा हेगला रिवर्स बायस माने करंट फ्लो होगा तो कौन लिखिबा ताले उपराडा लिखि दोची एठी ता माने बिल्कुल करंट नाही नेगेटिव हाफ साइकिल रे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल A is negative and B is positive. This makes diode reverse bias. So no current flows through the लोड देकी बिल्कुल भी करंट फ्लो हबो नाही नेगेटिव हाफ साइकिल रे पुणी पॉजिटिव हाफ साइकिल आसिला ए पॉजिटिव बी नेगेटिव पी पॉजिटिव एन नेगेटिव फॉरवर्ड बायस तो करंट जीरो डी को फ्लो पिला माने एटा तो डीसी बोली लागुनी डीसी आउ गोटे डेफिनेशन भी हमें कहि परिबा तो केबरे यूनिडायरेक्शनल करंट again during positive half cycle current flows from C to D ये तो करंट गोटे डायरेक्शन रे देखो एसी और डीसी भीतर फरक कोन देखो डीसी रे कोन हुए गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे करंट फ्लो हुए पानी रे एउठ बाहरला एमती फ्लो हैला एउठ बाहरला एमती फ्लो हैला एटा डीसी एसी रो जदी कैरेक्टर को देखो से सेमती हुए से जदी फास्ट एक्सेल सी टू डी बोला सेकंड को डी टू सी सी टू डी अप डाउन एमती हुए सो अगेन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एटा रिपीट करियो थर्ड पॉइंट एटा फर्स्ट पॉइंट एटा सेकंड पॉइंट एटा थर्ड पॉइंट को दिबा पहले माने लेखु थिबो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल again during positive half cycle current flows from C to D. This unidirectional current is called DC. But आउ गोटे कथा मन रखो एटा प्योर डीसी नुहे ये प्योर डीसी नुहे डीसी इतल तो एमती ग्राफ आस्थांदा एमती नुहे एटा प्योर डीसी ठीक अछि पिला आउ गोटे क्वेश्चन आसे बहुत सिंपल अछि गोटे पिला चाहिले 15 20 मिनिट भीतर एटा मन रखि परिबा देखो छी पिला efficiency पिला माने efficiency गोटे डेरिवेशन अछि बट डेरिवेशन तम सिलेबस रे नै स्ट्रिक्टली लिखु छी सिलेबस रे नो डेरिवेशन efficiency सब गोटे गोटे कथा मन रखिबो परसेंटेज रासे एंड आउटपुट पावर by input power into 100 and मन रखिबो हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी हला 40.6% एटा एक मार्क रो क्वेश्चन बराबर आसे हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी हला 40.6% माने आमे जदि 100 वोल्ट रो इनपुट रे 100 वोल्ट दबा आउटपुट रे 40.6 वोल्ट रो आउटपुट वोल्टेज पाइबा
40.6 मैंने 100 देले 40.6 पाइबा एटा कौन दरकार हम 100 वोल्ट रो इनपुट रे दबा आउटपुट रे 40.6 वोल्ट पाइबा किसी काम आसबनी हमको दुईटा जिनस ध्यान देकर नुआ गोटे रेक्टिफायर डिजाइन करिया पड़िबो फास्ट हमको कौन करिया पड़िबो एफिशिएंसी को बढ़ाइबार अछि एफिशिएंसी को बढ़ाइबार अछि 100 पाखापाखि जाऊ भल 100 दबा पाखापाखि 100 पाइबा एफिशिएंसी को बढ़ाइबार अछि फास्ट टास्क काम पाइ रहला सेकंड टास्क कौन आम कौन करिपरिबा आउ कौन करिपरिबा एठी आउ कौन कमी अछि जोटा आम रेक्टिफाई करिबा फास्ट आम गोटे जिनस जानले आमे हमको एफिशिएंसी को बढ़ाइबार अछि आमे इनपुट रे जदि आमे 100 दउचे 100 पाखापाखि मिलो एमति नो कि आम 100 दबा 40.6 पाइबा 100 देले पाखापाखि 100 पाइबा दरकार एफिशिएंसी को बढ़ाइबार अछि एटा हम फर्स्ट टास्क सेकंड कौन इन आउटपुट रे भी जो डीसी आसुची प्योर डीसी नहीं तो फ्लक्चुएटेड डीसी यास तो एसी मिसी के रहउची तो दुटा जिंस प्योर डीसी पाइबा को चेष्टा करिबा एफिशिएंसी को बढ़ाइबा तो सेटा को ध्यान रखी आमे नुआ गोटे रेक्टिफायर तैयारी करे जोटा को कहछ फुल वेव रेक्टिफायर जदि तुमको पचार फुल वेव रेक्टिफायर डिसएडवांटेजेस कौन मनकर मैं कहबी सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर डिसएडवांटेजेस कौन डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फर्स्ट पॉइंट कौन हो आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी आउटपुट तो प्योर डीसी नुहे सेकंड कौन एफिशिएंसी इज वेरी लो एफिशिएंसी इज वेरी लो एफिशिएंसी बहुत लो ए दुटा डिसएडवांटेजेस को नहीं कि हमें नुआ गोटे टाइप रो डिवाइस तैयारी कले जोटा हम कहछ फुल वेव रेक्टिफायर तो फुल वेव रेक्टिफायर विषय डिटेल पढिबा बहुत बहुत इंपोर्टेंट लंब क्वेश्चन पिला माने फुल वेव रेक्टिफायर पिला माने दुई प्रकार अछि फुल वेव रेक्टिफायर दुई प्रकार अछि गोटा सेंटर टैप्ड आउट ब्रिज टाइप तमरा सेंटर टैप रेक्टिफायर सिलेबस रे अछि एटा ही हमें पढिबा हमको ब्रिज टाइप जी बात नहीं ठीक अछि तो जीवा फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर पहला प्रिंसिपल सेम as half of rectifier सेटा जे लिखि दो एटा सेट लिखि दो प्रिंसिपल समान कंस्ट्रक्शन वर्किंग कंस्ट्रक्शन रे कोन होछ देख ट्रांसफार्मर लागि छै ट्रांसफार्मर एटा प्राइमरी कॉइल एंड ट्रांसफार्मर एटा सेकेंडरी कॉइल एठी गोटे पीएन जंक्शन डायोड लगे छै डायोड D1 एठी गोटे पीएन जंक्शन डायोड लगे छै डायोड D2 ठीक अछि माने दुईटा डायोड लगे छै डायोड D1 डायोड D2 एंड एटी सेंटर टैप करा छै टैप माने बुझ पाछा हम पाइप रो गोटे होल करा छै टैप ई जाय होल करा छै कनेक्शन करा छै एंड एठी रेजिस्टेंस लगे छै लोड रेजिस्टेंस RL एठी आमे आउटपुट पाइबा V0 इनपुट आमे दबा कोठी दबा प्राइमरी रे दबा एटा हला हमर कोन ट्रांसफार्मर माने एटा हला A एटा हला B एटा सेंटर टैप C एटा D
कंस्ट्रक्शन बुझीगला बुझीगला देखो तो पॉइंट नंबर 1 रे कोन लिखिबा पॉइंट नंबर 1 रे कोन लिखिबा फर्स्ट पॉइंट कोन लिखिबा एटा एसी सोर्स vi an AC source is connected with the primary coil of transformer ठीक है पिला बढ़िया फर्स्ट पॉइंट गला सेकंड रे कोन टू pn junction diode and load resistance two pn junction diode and a center tapped load resistance is connected with the secondary two diode and a load resistance is connected are connected with the secondary. Load resistance is center tapped at C. Load resistance is center tapped at C पॉइंट सेंटर टैप करा है ठीक है पिला बढ़िया कंस्ट्रक्शन इजी अच्छे बहुत सहज मन रखि परिबो एबे हम जिबा वर्किंग को तो कंस्ट्रक्शन लिखि दोछि वर्किंग को जिबा देखो पिला माने हमें इनपुट आउटपुट रो ग्राफ देखि देबा देखा जाऊ छोटे कैमरा देखि जे देखाउ छ नहीं के तळ को नहीं जिबा ठीक अछि एटी देखि दो छ एठाला इनपुट रो कथा बड़ा बड़ा होता एटाला इनपुट रो कथा एटाला टाइम इनपुट वोल्टेज मीटर ग्राफ एटाला टाइम एंड आउटपुट वोल्टेज मीटर ग्राफ ठीक है पिला देखिबा फर्स्ट पॉइंट वर्किंग रो पिला माने एसी रो पॉजिटिव हाफ साइकिल आसला पॉजिटिव नेगेटिव तो एसी रो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे ए हबो पॉजिटिव बी हबो नेगेटिव बढ़िया तल डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कारण डायोड D1 रो P पाइला पॉजिटिव डायोड D2 रो P पाइला नेगेटिव तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस डायोड D2 रिवर्स बायस यदि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हे गला डायोड D2 रिवर्स बायस हे गला त एटा गला शॉर्ट सर्किट माने एटा करंट फ्लो हो एटा गला ओपन सर्किट माने बिल्कुल करंट फ्लो होबनी तो करंट एमती चलला मु एमती डायग्राम करि परिबी एटा शॉर्ट सर्किट हे गला इट तो लोड रहिला एंड इट ओपन हे गला सर्किट तल करंट केमती फ्लो हो एउटू चलला एमती चलला एंड परचो चलला करंट तल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is forward bias during positive half cycle A is positive B is negative this makes diode D1 forward bias and diode D2 reverse bias so current flows through the load from D to C अपन लिख परिबा during positive half cycle of AC A is positive and B is
negative. This makes D1 forward bias and D2 reverse bias. So current flows through RL from D to C. कहाँ पाई फ्लो हैला D1 पाई फ्लो हैला तमाने सर्किट रे बे D2 रही कि जा न रही कि सेया एमती फील होचे सर्किट रे D2 नाही ठीक अछि बढ़िया सेकंड हाफ साइकिल को चला नेगेटिव हाफ साइकिल को ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल चला ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए ही गला नेगेटिव बी ही गला पॉजिटिव दिस मेक्स ए नेगेटिव बी पॉजिटिव A is negative and B is positive. This makes diode D1 reverse bias. Diode D1 reverse bias. Reverse bias and diode D2 forward bias. माने डायोड D1 टा रिवर्स करा काहे ना A पाइला नेगेटिव B पाइला पॉजिटिव P पाइला नेगेटिव A P पाइला पॉजिटिव तो ये डायगला रिवर्स बायस एटा गला फॉरवर्ड बायस तार करंट फ्लो हो सो करंट फ्लोज थ्रू द RL फ्रॉम D to C सेम कथा किंतु नेगेटिव हाफ साइकिल रे करंट D रो C को फ्लो हैला तो सिचुएशन एठी उल्टा है एटा ओपन एटा क्लोज करंट एम्ति गला एम्ति फ्लो हैला तो D2 पाई करंट फ्लो होची D1 पाई तमाने एबे फील होची सर्किट रे D1 ही नाही पॉजिटिव हाफ साइकिल रे D1 अछि D2 नाही नेगेटिव हाफ साइकिल रे D2 अछि D1 नाही बढ़िया पुनी जदी बा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तामे जदी रिपीट करिबा चालीबा सेमती तमाने इन बोथ द हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू द लोड फ्रॉम D to C in both the half cycle current flows through the load from D to C को फ्लो होची ताने पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल D2 पाई बुझोची this unidirectional current is called DC समझ आछि अगेन येटा प्योर DC नुहे मन रखा बेले बेले क्वेश्चन पचार दिए अगेन एटा भी प्योर DC नुहे आमे जत्ते प्रकार रो रेक्टिफायर तयारी कली भी रेक्टिफायर रो आउटपुट रे हमकु केबे भी प्योर DC मिलिबो नाही हायर क्लास को बोले पढिबो आ पोरे यार आउटपुट रे जोटा आसिला रेक्टिफायर आउटपुट जोटा आसिला याकु हम गोटे फिल्टर सर्किट लगेबा फिल्टर सर्किट कौन करिबो आकु एमतिया फ्लक्चुएटेड DC को एमती प्योर DC रे कन्वर्ट करिवो हायर क्लास को वाले पढिबो रिपिल गोटे टर्म आसो रिपिल माने मिक्सिंग ऑफ AC विथ DC आउटपुट रे जो DC मिलुची तास्त किछि AC मिसी के रहउची ए टाइप रे रहउची ना टिंग 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 दांत बलिया एमती रहिबा कथा ठीक अछि तेबे जिबा एफिशिएंसी कोन एफिशिएंसी पिला माने म कहै बोले परसेंटेज रसे परसेंटेज P आउटपुट by P input into 100 एटा के मन रख पिला 81.2%। यार डिसएडवांटेजेस कोन फास्ट अधिक कॉस्ट हे जाउची काना दीटा डायोड लागिची सेकंड कोन जदियो एफिशिएंसी हाफ ठारु अधिक एते भी अधिक नै
100 देले 100 वोल्ट जदि इनपुट रे दबा आउटपुट रे 81.2% 81.2 वोल्ट पाइबा बहुत अधिक नहीं। ठीक अच्छे पे आमर सेमीकंडक्टर एटा बहुत इंपोर्टेंट पे मत कहीं लगुच वर्ष सिओर आसो पूर्व वर्ष इलेक्ट्रोनिक्स नहीं क्वेश्चन पचे पकईनी क्या आगुरी मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोनिक्स दुटा डिफरेंट यूनिट थिला तेबे जदि मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोनिक्स जोड़ी तो पूर्व थर जदि न्यूक्लियर पकईला तो मोस्ट चांस कि ए वर्ष वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीएचएससी पिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट